Hello everybody, good afternoon. Welcome back to our class. So we were discussing fundamental rights and we have discussed till our article number 14 and we will be discussing right to equality and the other articles that are included in right to equality. So as I have told you guys that right to equality covers from which article? From article 14 till article 18. Okay, so we have discussed article 14. We'll be discussing 15, 16, 17, 18 today. Now, as I have told you, fundamental rights are mentioned in part 3 of our Indian Constitution and covers article 12 to article 35. Moving straight forward to our next article, that is article number 15. Okay. So here we have article number 15, which says prohibition of discrimination. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. किसी एक पर्सन को आप प्रेफरेंस दो, किसी और को डिस्क्रिमिनेट करो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर. तो ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है. आर्टिकल 15 क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन. और डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स क्या है? It states that this article prohibits discrimination in any manner, किसी भी manner में. States that no citizen shall on the grounds of race, religion, caste, place of birth, sex, or any of them be subject to availability, disability, restriction, or condition. Article says you cannot discriminate. You cannot discriminate between people on the basis of what? On the basis of race, religion, caste, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर, सेक्स और एनी ऑफ देम. आप किसी भी इंसान से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते. किसके बेसिस पे? कि वो कौन से रिलीजन का है, वो कौन सी कास्ट का है, वो कौन सी जगह पैदा हुआ है, उसका सेक्स क्या है, या फिर इनमें से किसी भी, या फिर इन सब में से इधर ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम. किसी के ऊपर भी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट इट स्टेट्स access to public places. See, this article 15 cover further clauses. इसके अंदर further clauses हैं. तो article 15 clause 1 क्या बोलता है? जो 15 clause 1 है वो बोलता है that state shall not discriminate its citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. This is what 15 clause 1 states. Now 15 clause 2, it states कि no citizen shall be denied. Denied to what? Public shops, hotels, restaurant. किसी भी citizen को आप deny नहीं कर सकते ऐसी जगह पे एंट्री करने के लिए. ये with respect to कि वो कौन सी कास्ट का है, उसका कलर क्या है, whether that person is a dark colored person या फिर white colored person, आप उस बेसिस पे उसमें discriminate नहीं कर सकते हो. तो 15 says what? No person is denied to enter. No person shall be denied to enter public place, that is shops, restrooms, hotels, water tanks, etc. Okay, on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. Next it states what? Next 15 clause 3 में बोलता है this contains special provisions. 15 clause 3 में है special provisions with respect to women and children. State is allowed to formulate some special provisions for children and women. That is 15 clause 3. तो यहाँ पे देखो आपके पास में है this 2 points. Access to public places, use of tanks, wells, ghats, etc. that are maintained by the state or that are meant for general public. This is our 15 clause 2. Next it states, the article also mentions that special provision can be made. What it also mentions, कि special provision बनाए जा सकते हैं. किसके लिए? For women and children and the backward class, notwithstanding this article. ठीक है, किसके लिए special provision बनाए जा सकते हैं? Women, children and backward class.
This is what 15 clause 3 states. Now, there is one more thing that we have to keep in mind over here. जो हमारा 15 clause 4 है, जब हमने क्या पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर में, जब हम पढ़ रहे थे और हमने उस टाइम पे पढ़ा था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 15 clause 4 ऐड हुआ था. दैट वाज रिजर्वेशन. It states, this 15 clause 4 states what? It states that state can make what? State can make certain laws for the welfare of what? For welfare of reservation. किस basis पे हुआ था 15 clause 4 के अंदर? Socially and educationally backward section. Socially and educationally backward class के लिए state can make certain provisions, can make certain reservations. This is what this article states. Now, in this 15 clause 3, we have one more thing. In this article 15, we have one more clause, that is 15 clause 5. 15 clause 5 जो था वो हमारा 93rd CA Constitution Amendment Act of 2005 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था. What this states, it empowered the state. जो हमारा state है ये क्या करता है, उसे empower करता है for what? For advancement of socially and educationally backward classes, socially और educationally backward classes के advancement के लिए, and for admission in educational institutions. For admission in which? Educational institutions. Okay. Now, see, after this what happened? There is one of the most important 103rd Constitution Amendment Act आया 2019 में, and it added 15 subclause 6. 15 clause 6 वो add हुआ उसमें, and इसमें what happened? It state that कि जो state है वो क्या कर सकता है, वो economically weaker section, अभी तक हम educationally और socially backward section के बारे में बात कर रहे थे. It says economically weaker section, जो हमारा economically weaker section है उसके advancement के लिए भी state क्या formulate कर सकता है, laws formulate कर सकता है. ठीक है, other than the citizens जो mentioned है हमारे 15 clause 4 में जो mentioned है, उसके अलावा भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्टेट क्या कर सकता है, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए स्टेट क्या कर सकता है, कुछ सर्टेन प्रोविजंस ला सकता है. सो बाय दिस देयर वाज 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS where in educational institutions. तो हमारा जो आर्टिकल है वो मेनली क्या प्रोहिबिट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का भेदभाव प्रोहिबिट करता है. एंड व्हाट इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. किसी भी पर्सन को आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. किन ग्राउंड्स पे? द ग्राउंड्स आर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. This is what it states. Everyone has access to public places. They can use what? They can use the general public toilets, tanks, wells and ghats, जो कि किसने maintain किए हुए हैं, which are maintained by the state, और जो general public के use के लिए वहां पर है. It also state that what? It also state that state can make certain special provisions for women, children and backward classes. Okay, इसमें हमने total कितने clauses हैं? 15 clause 6. So we have total how many clauses? We have 6 clauses under this. Okay, so you can just, what you have to do, you have to keep in mind what article 15 is all about and the important amendments जो article 15 से related है. कौन कौन से amendments है हमारे पास article 15 से related? I'm writing them over here. First is 93rd Constitution Amendment Act of 2005. Very first Constitution Amendment Act 1951, and next goes 103rd Constitution Amendment Act 2019. This is what you have to keep in mind. Okay, you can expect questions कि जो हमारा article 15 है
Which one of the following amendment was done in Article 50? कौन सा amendment है हमारा? 93rd, or which one is the given in the option? That one will be the correct answer. Now, next है Article 16. Article 16 में heading क्या है? Equality of opportunity in matters of what? In matters of public employment. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. दिस इज व्हाट आर्टिकल 16 स्टेट्स. So Article 16 provides equal opportunities in state services for all citizens. सब citizens को क्या provide कर रहे हैं? Equal opportunities. कहाँ पे? State services में. Next it states, no citizen shall be discriminated. कोई भी citizen को हम discriminate नहीं कर सकते हैं against in the matter of public employment or appointment on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth, descent और residence. आप किसी भी इंसान को discriminate नहीं कर सकते हैं. Public employment में आप ये नहीं बोल सकते कि तुम इस particular caste के हो, so you cannot participate in this public employment. Okay, you are not eligible for it. You cannot discriminate. On the basis of what? On the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth, descent or residence. Now, next it states that there are certain exceptions that we can make. There are certain exceptions हैं जो यहाँ पे हम इसमें consider करते हैं in Article 16. For example, क्या Article 16 में क्या क्या हमारे पास examples हैं वो discuss करते हैं. So Article 16 में हमारे पास examples आते हैं. For example की जैसे कि there is this वक्फ board. Okay. इस तरह की जो religious organizations होती हैं उनका जो head होता है वहां पे किसको प्रेफरेंस मिलती है? उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को. दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पे किसको प्रेफरेंस मिलेगी? अगर वहां का आपको हेड किसी पर्सन को चूज करना है तो उस रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को. So these are the kind of exceptions जो हम वहाँ पे consider करते हैं in Article 16. Now, let's move forward. अब Article 17 states what? Article 17 states abolition of untouchability. Abolition of untouchability. Untouchability क्या होता है? Untouchability is पुराने टाइम में there is this, लोग क्या करते थे, ये मानते थे कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन ने हमें, इस लोअर कास्ट पर्सन ने हमें छू लिया, then what? इट इज काइंड ऑफ छुआछूत की एक तरह से प्रथा थी पहले कि अगर उस पर्सन ने हमको छू लिया तो हम क्या हो गए? वी आर पोल्यूटेड. तो दिस इज व्हाट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी स्टेट्स. देयर इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एज पर आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 सेज दैट इट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 17. अपार्ट फ्रॉम दैट इट सेज दैट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड इन ऑल फॉर्म्स. हर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो स्टेट्स दैट एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस. अनटचेबिलिटी की वजह से अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या कम्युनिटी को कोई भी डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, दैट इज एन ऑफेंस. फॉर अनटचेबिलिटी वी से दैट आर्टिकल 17 जो है हमारा, आर्टिकल 17 is an absolute right. What it is? It is an absolute right. Why we say that it is an absolute right? Because untouchability को इंडिया में किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं किया जाएगा. It is what? It is not tolerable in India. So this is what this Article 17 abolition of untouchability states. The another thing was also there. The Union Parliament did one thing. There are two kinds of acts that we discuss in abolition of untouchability. The very first thing is Union Parliament what did in 1953. 1953 ने Parliament enacted the Untouchability Offence Act. Untouchability Offence Act. Okay, by this what happened? Why this Untouchability Offence Act got enacted in 1953? So that they can
do what? They can punish. Punishment for practicing untouchability was given. For practicing untouchability was given. Okay. Now what happened after certain point of time in 1976? In 1976, Parliament did what? There was an amendment made in this Untouchability Act, and what the name got changed from Untouchability Act to Civil Right Protection Act of 1976. In 1976, the Act name got changed to Civil Right Protection Act. Okay, and why there was the need of amendment? By this, the punishment for untouchability got increased. Okay, punishment for practicing untouchability in India, what it happened? It got increased. So this is what we have in our Article 17, that is abolition of untouchability. Now, next come is Article 18, which states abolition of what? Abolition of titles. Article 18, by titles you mean what? By title means all the, we can say this Maharaja is a title. Okay, किसी भी person को जो भी आपने उपाधि दी है, in Hindi we say this na, we say this word. Okay, so that is abolition of title. You cannot what? You cannot have any kind of title. State shall not confer any title except those which are academic or military. State आपको कोई भी title confer नहीं कर सकता है except academic or military title. Academic title is the one which you have gained through your knowledge, and military title is which you gain when you serve the country. Okay. So Article 18 states this. So Article 18 further have some subclauses. We will discuss them. Just let me erase this for a moment. Yeah. So now, Article 18 Clause 1 states what? 18 Clause 1 में बोला गया है that no title shall be conferred by the state. No title shall be conferred, this one, by the state except those military and academic. This is 18 Clause 1. Okay. This is our Article 18 Clause 1. Next it states, Article also prohibits citizens of India from accepting any title from what? From foreign state. This article, abolition of titles, it also prohibits Indian citizens to what? It also prohibits Indian citizens to accept any title from a foreign state. This is Article 18 Clause 2. If you are an Indian citizen, you cannot accept any title from any other foreign state. Next it states that Article 18 Clause 3 over here. Look, you can write, see over here. Article 18 Clause 3 states that any person who is not a citizen of India, any person who is not a citizen of India, but who is holding any office under what? Under the state. And if this person who is not a citizen of India, he cannot accept any title from, any other state, without the permission of who? President of India. 18 Clause 3 में बोला है अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया का क्या है, सिटीजन नहीं है, पर वो इंडियन स्टेट के अंदर एक ऑफिस होल्ड कर रहा है, then that person can also not accept any title from any other state of the world, only if he gets the permission of what? The President of India, then he is allowed. If he don't get the permission of President of India, then he is not allowed. And why President is given over here? Because we know that who is the head of a union? President is the head of the union. So that's why the permission of President is what? The permission of President is necessary. So without the permission of President, you cannot accept any title. You cannot accept any title from any other foreign state.
I hope this is clear. Now, next it is written over here. Article abolishes the title that were awarded by the British Empire. The titles that were awarded to certain people by the British Empire, for example, Rai Bahadur, Khan Bahadur, such kind of titles were also abolished by this article. Awards like Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, and military honors like Ashok Chakra, Paramveer Chakra do not belong to this category. So what this states, the awards such as the Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, all these what? All these are acceptable. And military honors like Ashok Chakra, Paramveer Chakra, they do not belong to this particular category, abolition of titles. Okay, because Article 18 Clause 1 states what? State shall not confer any title except those which are what? Which are academic or military in nature. So this is what we have in our Article 13. Now, next comes to Article 19. That is right to freedom. So right to freedom covers how many articles? Article 19, it covers from 19 to 22. 19 to 22. Okay, so we will discuss all these articles. So Article 19 here states what? Article 19 states right to freedom. So right to freedom may we have 6 freedom that were guaranteed to us by the Constitution. Okay. और जो इसी Article 19 के further sub clauses. So let's discuss these. The very first is freedom of speech and expression. Speech and expression का मतलब क्या है? That you have right to say. Okay, you have right to say and express your opinion. And express your opinion. For example, what it says, जैसे कि hoisting flag hoist करते हैं. It is part of what? It is a part of speech and expression. Now, over here it states that state guarantees freedom of speech and expression to every person of India. State does what? It guarantees the freedom of speech and expression to every person of India. However, state can impose restriction on the freedom of speech and expression in the interest of integrity, security, sovereignty of the country. अगर स्टेट क्या बोलता है कि स्टेट आपको फ्रीडम गारंटी करता है कि आप कुछ भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, बट इट ऑल्सो स्टेट्स दैट कि स्टेट रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे. किस इंटरेस्ट में कि आप जो बोल रहे हो या आप जो कर रहे हो वो इंडिया की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को अफेक्ट ना करे. अगर वो अफेक्ट नहीं कर रहा है देन यू आर अलाउड, यू कैन गो फॉरवर्ड. बट इफ इट इज अफेक्टिंग द नेशन सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी एज वेल एज इंटेग्रिटी, then state will impose restrictions of that. Next it states friendly relations with foreign nations for public order with respect to defamation, incitement to offense or contempt of court. Restrictions किन किन चीजों पे है? अगर वो इफेक्ट कर रहा है हमारा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशंस बाकी फॉरेन नेशंस के साथ, पब्लिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. या तो वो पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है, वो डिफेमेशन को डिफेम कर रहा है कंट्री को, या फिर फॉरेन रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है, या फिर उसकी वजह से कोई ऐसा ऑफेंस होने वाला है जिसको फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं विद टाइम, अब कुछ ऐसे स्पीच और एक्सप्रेशन किसी पर्सन ने दिया कि वो जो क्राउड था वो वायलेंट हो गया. ओके, वो क्या कर रहा है वहां पे वो वायलेंस इंड्यूस कर रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा? देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ओके, यू आर नॉट व्हाट वी विल से दैट कि आप कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. दैट इज काउंटेड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स, फर्स्ट है इसके अंदर फ्रीडम टू असेंबल. पहला हमने यहाँ पे पढ़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस इज द सेकंड वन. दिस इज वन इज द सेकंड वन.
And this is the third one. फ्रीडम टू असेंबल. फ्रीडम टू असेंबल हमें क्या मिला है? स्टेट ने हर पर्सन को गारंटी किया है कि वो क्या हो, कि वो पीसफुली कोई भी असेंबली कंडक्ट कर सकता है, आप पीसफुली कहीं पे भी मिल सकते हो विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के. अगर आप वहां पे कोई भी आर्म नहीं लेके जा रहे हो, आर्म और एम्यूनिशन के बिना आप वहां पे जा रहे हो, देन यू आर अलाउड, यू कैन असेंबल पीसफुली. ओके, अंडर दिस वी रीड आर्टिकल 144. हमने पढ़ा है कोविड के टाइम पे ये जो 144 का जो सीआरपीसी था, बहुत ज्यादा यूज हुआ. मजिस्ट्रेट हैव द पावर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में पावर है, दैट व्हाट ही कैन डू. इट स्टेट दैट कि अगर 4 लोगों से ज्यादा आप वहां पे असेंबल हो रहे हो, देन डीएम हैव द पावर टू व्हाट, टू स्टॉप दैट असेंबली. नाउ यहाँ पे हम बोलते हैं however as reasonable restriction can be imposed in the interest of sovereignty and integrity of the country and public order, but reasonable restrictions जो हैं वो impose कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? अगर आप sovereignty और integrity को affect कर रहे हो country की, या फिर public order को affect कर रहे हो. Okay, so this is what it states. Now next we have over here is right to form associations, unions and cooperative society. This is what, this is the next freedom that that article 19 guarantees to us. It states that कि state reasonable restrictions impose कर सकता है in the interest of what, integrity, security and sovereignty of the country. वही सारे के सारे reasons जो हमने पढ़े थे restrictions impose करने के. Okay, but what they state, you have a right to form what, to form association. For example, workers की association होती है, trade union form कर लेते हैं workers factory में जो काम करता है. उसके अलावा cooperative societies आप form कर सकते हो, cooperative societies you can form. Okay, now next thing over here we have, I like to discuss one topic, that is Bandh and Hartal. We have heard these words many times in news. Okay. See, Hartal is valid because whenever there is a Hartal, at that point of time, what? We both know that these two are form of strikes. ठीक है? Strike के form है, जो strikes होती हैं, worker strike हो गई, doctor strike हो गई. So these are what? These are form of strikes. So Hartal is valid. Why it is valid? Because they follow certain procedure. They give an advance notice. But Bandh is illegal. क्योंकि वो क्या, यहाँ पे जो बंद है ना, what happened whenever there is Bandh, the one thing that get affected is right to life and personal liberty. It affects right to life and personal liberty. Okay, there is no particular procedure during a bandh, no particular procedure. Okay, now we know that ये जो right to strike है हमारा, as I told you that these two are bandh and hartal, what they are right to strike. This right to strike, it is not a fundamental right. Right to strike is not a fundamental right. It is what? Right to strike is a legal right. Okay, just a small topic and a basic difference between what is bandh and what is hartal. Now, next we have with us, next freedom that is guaranteed to us is freedom to move freely, okay, throughout the country. Freedom to move freely throughout the country. So what does this mean? It states that every citizen can move freely throughout the territory of India, but there are some restrictions. कुछ restrictions कैसे? For example, जैसे यहाँ पे है, restricted scheduled tribes area है, you cannot go there. Okay, अब for example, there is this, we have heard of the Sentinelese tribe, कुछ time पहले it was in news, year back or so. Okay, so Sentinelese tribe are what we consider as them as a dangerous tribe.
they killed one person. So आपका ऐसे किसी भी scheduled tribe area में जाना allowed नहीं है. Okay, if somebody tries, I want to cross the border and enter POK, it's part of India, then it is not allowed. There are some reasonable restriction. और reasonable restrictions हमने पढ़े अभी क्या है, या तो security reasons है, whether it is affecting the relations of India with some other country, whether it is compromising the integrity and the unity of the nation. Next thing, it is leading to defamation, and whether it is what? It is incitement of violence. So this is what freedom of movement states. It states that if you are a citizen of India, you can move throughout the country, but this right is restricted on the grounds of security, public order, or protecting the interest of the scheduled tribes. Now, next it states freedom of residence. Freedom of residence का मतलब है कि you have a right to reside in any part of the country. आप दुनिया के, हमारे देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, ठीक है, you can reside there, but there are certain restrictions. Okay, you can settle anywhere, but there are certain restrictions. अब restrictions कैसे हैं? Restrictions वही same है, ground of security, public order, protecting the interest of scheduled tribes, and if you are inciting, if you are going to any place where it is not allowed because of security reasons. Okay. Next come freedom of profession. Freedom of profession states what? It states that all citizens have a right to carry on trade or profession or occupation, provided that the trade occupation is not illegal or immoral. You have a right, you can carry on any trade, you can profess any profession. आप किसी भी profession में जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, with regard कि अगर वो आपका profession या फिर आपका occupation क्या नहीं है, illegal नहीं है. If it is legal, you can practice it anywhere in the country. Also, the law doesn't prevent the state from making laws related to technical or professional qualifications required for practicing the occupation or trade. ये law और भी क्या prevent करता है? Prevent the state from making laws related to technical or professional qualification. It prevents state कि वो ऐसे कोई law नहीं बनाए जो किससे related हो, technical या फिर professional qualification से. It does not prevent the state. अगर for example आप क्या कर रहे हो? You are doing B.Ed. So if there is certain qualification that is required, that you must be a graduate, then what this states, that state has a right. अगर आप जो भी law, जो भी आप occupation कर रहे हो, उसके लिए you must be what? There must be certain qualification. This is also, it states, for example, if you want to be an engineer, you must done what? आपको engineering करनी होगी किसी particular college से. Either you must be from mechanical background or CS background or IT or civil. So what it states, that state can what? The law does not prevent the state from making laws related to technical or professional qualifications जो required है किसी भी occupation को practice करने से. If you want to become a doctor, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठोगे और decide करोगे आज से मैं doctor हूँ. No, you have to what? You have to give NEET, you have to clear MBBS, then you have to do your MD. All after covering all these things, then you will be what? You will be a good doctor. Even though after MBBS you can, but that will be a general physician. Now, next comes to the next important article, that is Article 20. Article 20 में क्या है? Protection in respect of conviction of offenses. See, इस article के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं. पहला is retrospective criminal legislation, next double jeopardy, and next is self-incrimination. So what does this retrospective criminal legislation means? It states that, इसको हम ex post facto law भी बोलते हैं पहले तो. Next, what it states this, it states that a person cannot be convicted for an act that was committed at a time when the act had not been declared by the law as an offense. अगर for example आज से 20 साल पहले कोई ऐसा लॉ था कि जिसमें बोला गया था, it is just an example, don't take it seriously, जिसमें से बोला गया था कि घर छोड़ के जाना, अभी भी आज के टाइम पे भी it is not a offense, कि घर छोड़ के जाना what it is not a crime, but after 20 years it is said that if you will leave your home it will be considered as a crime.
सो व्हाट इट स्टेट दैट कि किसी पर्सन को जिसने 20 साल पहले अपना घर छोड़ा था, वो एक्ट कमिट किया था उसने उस टाइम पे, ठीक है, कोई क्राइम कमिट किया था जो कि आज पर्टिकुलर आज के टाइम पे क्या है, एक तरह से क्राइम है, पहले नहीं था, तो आप उसको आज कन्विक्ट नहीं कर सकते हो कि अब 20 ईयर्स पहले आपने ये चीज की थी तो चलो आपको जेल में जाना पड़ेगा. सो व्हाट इट स्टेट्स, a person cannot be convicted for an act that was committed at a time. कोई भी ऐसे एक्ट के लिए उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं जो तब कमिट किया गया था when the act had not been declared by the law as an offense. जब वो एक्ट लॉ ने एज ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है, अगर पहले वो क्राइम नहीं था और आज है तो आप उसको उसके लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते हो. नाउ what it say, this mean that criminal legislation cannot be given a retrospective effect. जो criminal legislation है उसको आप एक retrospective effect नहीं दे सकते हो. Next it states this immunity cannot be used against the provision of preventive detention. आप preventive detention हम आगे पढ़ेंगे, punitive and preventive detention, उसमें I'll explain. ये जो immunity है ये आप preventive detention के केस में नहीं ले सकते हो. Next it states what? The law also provides that a person cannot be subject to a punishment greater than what is prescribed by the law for the offense committed. अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है और अगर लॉ के अकॉर्डिंग उसका जो पनिशमेंट है वो 3 साल है, इट इज फॉर 3 years. तो आप उसको 6 साल का पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, आप उसको 6 साल के लिए प्रिजन में नहीं रख सकते हो. सो इफ अ पर्सन कमिटेड अ क्राइम और उस क्राइम का जो पनिशमेंट है इट कैन बी only that punishment which is prescribed by the law for that offense committed. You cannot increase or decrease it accordingly. Okay, so this is what this article 20 states. Now article 20 में हम article 20 clause 2 में पढ़ेंगे double jeopardy. अब डबल jeopardy में क्या है? डबल jeopardy states कि अगर एक पर्सन ने एक क्राइम कमिट किया है आज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट 4 अगस्त को, और आज ही उसको उस चीज के लिए पनिशमेंट मिल गया है. ओके, अब ऐसा नहीं है कि 8 अगस्त को फिर से आप उस पर्सन को उस चीज के लिए पनिश कर दो. सो दिस इज व्हाट डबल jeopardy is. It states that a person cannot be convicted for the same offense more than once. एक पर्सन को अगर उसने कोई गलती की है या फिर उसने कोई ऑफेंस किया है, उस चीज के लिए आप उसे 2 बार कन्विक्शन नहीं दे सकते हो, ठीक है, आप 2 बार उसको पनिश नहीं कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट दिस स्टेट्स. नाउ नेक्स्ट कम प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्टेट्स व्हाट? सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्टेट्स व्हाट कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ऑफेंस का चार्जेस है कि हाँ दिस पर्सन, ये है पर्सन ए और इसने इस पर्टिकुलर इंसान के घर में क्या किया है, उसने थेफ्ट किया है. तो आप अगर उसके ऊपर कोई एक्यूजेशन है कि दिस पर्सन डिड दिस, तो दैट पर्सन इज नॉट कंपेल्ड, ठीक है, उसको मतलब वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता है. दिस इज व्हाट वी कैन से इन लेमन लैंग्वेजेस. वी से दैट कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू बियर विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए. ही कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द स्टेट कि आप बोलो कि नहीं मैंने किया है, ठीक है. सो दिस इज नॉट, स्टेट कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू बियर विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. सो दिस इज व्हाट सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्टेट्स. Now, this is what we have in our Article 20 Clause 1, 20 Clause 2 and 20 Clause 3. ये हमारे पास हमारे 3 parts थे Article 20 के. Now next come one of the most important article of our fundamental rights, and one of the most important fundamental rights that we have is protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty का मतलब क्या है? That no person, कोई भी इंसान shall be deprived of his life and personal liberty by the state except as per the procedure established by law. If there is a procedure established by law कि आपने इतना कोई heinous crime किया है and उसके बदले आपको क्या है, you have got what? You have got execution sentence. Then
then only you can be what, deprived of your life. Otherwise no person shall be deprived of his life and personal liberty by the state. किसी भी इंसान की जो right to life है उसके पास है, किसी भी person से आप वो छीन नहीं सकते हो, ठीक है, except as per the procedure जो law के through establish किया गया है. This article has a wide scope and its interpretation has undergone many changes over the decades. बहुत wide scope है हमारे इस article 21 का, और इसकी जो with time है उसकी जो interpretation है वो क्या हुई है, वो चेंज हुई है. अब कैसे चेंज हुई है, सी व्हाट वी कंसिस्ट आर्टिकल 19 में. यहाँ पे हमारे पास है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इन दिस इज आर्टिकल 21. write down the first point, and then you will, when you will write down this procedure established by law, write down taken from which constitution, Japanese constitution. हमने जापान से लिया है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो और हमने कहां से इनकॉर्पोरेट किया है, वहां से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है. सो आर्टिकल 21 स्टेट्स दिस थिंग ओनली कि कोई भी पर्सन है आप उससे उसकी लाइफ को डिप्राइव नहीं कर सकते हो, ना उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन सकते हो by except as per the procedure which is established by the law. अगर उसने कोई crime commit किया है then judiciary is there to punish him, and because of that if अगर उसका crime बहुत ज्यादा heinous है then he will face what, execution. Okay, so this is what it states. Now next thing it states is यहाँ पे है Supreme Court has interpreted the right to life as a right to dignified life. सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया है, एज द राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. एक डिग्निफाइड लाइफ, एक रिस्पॉन्सिबल, एक इज्जतदार लाइफ जीने की राइट है हमारे पास. नेक्स्ट थिंग इट स्टेट्स, this is the most important right in one sense because without this right all other fundamental rights would be meaningless. It's true, अगर आपके पास अपनी right to life ही नहीं होगी, if you don't have your right to life, then how all other rights are meaningful. बिना राइट टू लाइफ के कोई भी राइट क्या है, ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस. नेक्स्ट इट स्टेट्स, इट इज दिस आर्टिकल दैट डिफरेंशिएट बिटवीन अ पुलिस स्टेट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट. दीज टू आर द मेजर टर्म्स. ये क्या है, ये क्या डिफरेंशिएट करता है एक पुलिस स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के बीच में. नाउ व्हाट इज अ पुलिस स्टेट एंड व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट? पुलिस स्टेट इज where you are not, where everything is in state's hand. Okay, and a constitutional state is where constitution is your supreme law of land. Constitution is supreme and everything works according to what? According to constitution. Okay, so this article helps us in differentiating between एक पुलिस स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के बीच का डिफरेंशिएशन हमें इस आर्टिकल के थ्रू पता चलता है. इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर कंट्री व्हिच इज डिप्राइविंग यू ऑफ राइट टू लाइफ, देन we will say it is what, it is a police state, and if it is not depriving you, it is a constitutional state. Now we have article 21 clause A. Article 21 clause A states, ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. Okay, what article 21 clause A is? It is right to education. Right to education. ओके, राइट टू एजुकेशन हमने इंक्लूड किया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, व्हाट इट स्टेट्स दैट कि एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 is the duty of state to provide free and compulsory education to the child. Okay, so 86th constitutional amendment के through Article 21 clause A got introduced, and it states that states shall provide what? Free and compulsory education. Free भी है और compulsory भी है to all the children between the age of what? 6 and 14. Now, next come protection against arrest and detention in certain cases. अब protection against arrest and detention में हम पढ़ेंगे एक बहुत important चीज, that is punitive and preventive detention. Okay, see, we have two kinds of detention. First is punitive detention and next is preventive detention.
प्यूनिटिव डिटेंशन इज जब आप किसी पर्सन को डिटेन करते हो, ठीक है, इफ एनी पर्सन जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, डिटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ detention, we say that it is detention of an individual after trial. जब वो पर्सन क्या है, he got accused कि हाँ ये जो पर्सन था इसी ने ही ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, that is our punitive detention. Now comes preventive detention. Preventive detention is the one जो हम अपनी national security के रिस्पेक्ट में करते हैं. कैसे? We say that it is a detention without trial. बिना किसी ट्रायल के डिटेन कर लिया आपने. Okay, so what happened? Why we do preventive detention? Very first thing is national security. ठीक है, अब किस लिए हम इसको करते हैं? पर्सन में भी जो भी पर्सन है उसको हम डिटेन करेंगे विदाउट व्हाट, विदाउट प्रोवाइडिंग इट्स गिल्ट इन प्रिवेंटिव, विदाउट प्रोवाइडिंग और विदाउट प्रूविंग, वी कैन से विदाउट प्रूविंग इट्स गिल्ट, हम उसको क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको पहले देयर वर लॉज, जैसे कि टाडा, यूएपीए, पोटा, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर दोज लॉज जिनके अंडर हम व्हाट, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं. ठीक है, अगर हमने किसी पर्सन को इनके अंडर अरेस्ट किया है तो हम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में काउंट करेंगे. प्यूनिटिव में क्या होता है, प्रॉपर ट्रायल होता है आपका, वो जो पर्टिकुलर चीज आपने की है उसको प्रॉपर ट्रायल के थ्रू आपको एक्यूज किया जाएगा, उसके बाद आपको डिटेन किया जाएगा. बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या करते हैं, देयर इज नो ट्रायल, यू गेट डिटेन्ड. If you are involved in any kind of terrorist activity, government no, there is no need of trial, you get detained under all these acts. Okay, so this is what that states. Now आर्टिकल 22 हमारा किस चीज में डील करता है, इट डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल, कौन सा, आर्टिकल 22. Now what this article states, first of all this article is applicable to both citizens and non-citizens. Citizens और non-citizens दोनों के पास है ये आर्टिकल. I have told you article 14, 20, 21, 22 till 28, ये दोनों हमारे सिटीजन्स और फॉरेनर्स के पास क्या है, अवेलेबल. ओके, this is available to both. Okay, now next thing it states, this provision extends certain procedural safeguards for individuals in case of arrest. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो इसके अंदर क्या है, कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ सेफगार्ड्स है उन लोगों के लिए. Okay, it comes into a picture when a person has been arrested and it is not a fundamental right against detention and arrest. अगर कोई भी पर्सन है जिसको आपने अरेस्ट कर लिया है और वो फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, then this articles come into what effect. Next thing it states, the idea behind this article is to prevent what, arbitrary arrest and detention. Okay, बहुत बार क्या होता है कि you have not done anything and then you got detained because of any of the misunderstandings or anything. तो उस arbitrary arrest से, ठीक है, उस arbitrary state से आपको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है. This particular article is given in our Indian Constitution. Next it states, the article provides the following safeguards. Article कुछ फॉलोइंग सेफगार्ड प्रोवाइड करता है. 21 clause 1, clause 2 and clause 3. तो 21 clause 1 क्या बोलता है, any person who is in custody has to be informed as to why he has been arrested. Further, he cannot be denied the right to consult an advocate. कोई भी पर्सन है जो कस्टडी में है उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो अरेस्ट क्यों हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज कि if that person wants to consult to that advocate, he cannot be denied that right. अगर वो बोलता है कि I will talk only if my lawyer is here, आजकल हम मोस्टली वेब सीरीज में इस चीज देखते हैं, जैसे I will not speak until my lawyer is here. Same thing, अगर वो बोलता है कि I want to consult to an advocate, that right cannot be denied to that person. Now, Article 22 clause 2 क्या बोलता है, it says that arrested individual should be produced before a judicial magistrate within 24 hours of his arrest. कि वो जो arrested individual है उसको आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, कितने टाइम में, 24 hours of his arrest. उसके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना. नेक्स्ट कम आर्टिकल 22 clause 3. 22 clause 3 states that no individual who has been arrested can be kept in a
custody more than a period determined by the judicial magistrate. जो पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है, आप उसको सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए कस्टडी में रख सकते हो जितना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अलाउ किया है. अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि आप खाली 2 दिन के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी में रख सकते हो, देन व्हाट, यू हैव टू कीप इट ओनली हिम फॉर 2 days. अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट said that you can keep it for him for 4 days, then what, then you can keep him for 4 days. So what it states that no person, no individual who has been arrested can be kept in custody more than a period determined by the judicial magistrate. ऐसा नहीं है कि अगर 4 दिन बोला है तो आप 7 दिन रखो. That is not allowed. तो अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको उतने ही टाइम के लिए रखा जाएगा जितना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलेगा. Now, these safeguards, however, are not applicable to enemy aliens. Enemy aliens और foreigners में difference है. Okay, foreigners are those who are not our enemies. Simple. Enemy क्या है? हमारे जो दुश्मन है. For example, India is in war with some other country. Okay, with that enemy alien, what? This article is not applicable. People arrested under preventive detention laws. I have told you what are preventive detention laws. जहाँ पे हम जो detention करते हैं वहाँ पे क्या होता है? There is no trial. We know that this person committed this and that's why he is under this. Or people who are arrested under what? UAPA, TADA. These are the earlier acts. कोटा, ठीक है. इन सब के अंडर अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है, then that person. So we have done our article number 15, 16, 17, 18. And we have done 19, 20, 21 and 22. हमने 2 major parts cover किए हैं आपने आज. We have done right to freedom. We have completed the full right to freedom, and we have completed right to equality. In tomorrow's class, we will be discussing right against exploitation, right to freedom of religion, and cultural and educational rights. Okay. So that's all for today's class. If you have any doubt with respect to this lecture, please let me know down in the comment section. And tomorrow I will see you at morning 10 a.m. Okay, have a good day ahead. Keep revising and keep studying.